Dear students, Maharashtra State Board 12th English 2020-21, this academic year, the board has launched new syllabus as well as new paper pattern. So here we are going to just study overall evaluation of 80 marks. The paper is of 80 marks. How many marks? 80 marks, correct? Let me tell you how the marks are distributed. There are sections: prose, poetry, writing skill, novel. Novel is a welcome, means what I'm saying, additional change or additional submission this year. Earlier, novel was not there. My dear students, prose carries 34 marks without options. Poetry grabs 14 marks out of 80 without option. But writing skill, they have given ample options. Compulsory 16 marks, but they have made slots. Later on, we'll see how the slots are made. So 48 marks are there overall, but 16 marks are compulsory. Whereas novel without option grabs 16 marks. So overall paper is of 80 marks, right? Now, if we think of distribution of marks as per a question in the activity sheet, objective questions are of 80 marks, 18 marks. Short answer type 36 marks, whereas long answer type 26 marks. So the paper carries 80 marks. Percentage wise, objective grabs 22%, short answer type 45%, and long answer type 32% approximately. So 100 marks are divided according to that pattern. Okay, now let's move forward to see further changes. But after some time, they have made new declaration. 4 to 5 changes have been made. Here in this video, we are going to study the certain changes. Hai tayar? Let's go. Now, my dear students, question number first, section wise we'll talk about. Section first है prose section, जिसे हम बोलते हैं lessons, correct? So it includes reading for comprehension, language study, summary, note making, and mind mapping. This mind mapping, my dear, it's a new concept. I will explain this one. So question number first, A, it's scene passage. Scene passage that carries for 12 marks. It will be passage of 275-300 words, regular passage. My dear students, जो 12 मार्क है, how they are divided, let's see. पहला क्वेश्चन है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, जो 2 मार्क के लिए है. दे मे आस्क ट्रू और फॉल्स, मे बी डायग्राम, ऑब्जेक्टिव बेस. सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके लिए 2 मार्क है. थर्ड है इंटरप्रिटेशन और इन्फ्लुएंस और एनालिसिस, अगेन इट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए. पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन 2 मार्क के लिए है. आपको मालूम है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन थीम विल बी ऑफ पैसेज, बट क्वेश्चन विल बी आउटसाइड, जनरल क्वेश्चन. यहां पे थोड़ा सा नोट कीजिए, 5th क्वेश्चन जो है वो ग्रामर का है, एंड दिस क्वेश्चन इज चेंज, लैंग्वेज स्टडी. चेंज मीन्स डोंट वरी, पहले क्या होता था, ग्रामर आपको मीन्स यू हैव टू राइट द आंसर. अब इस पेपर पैटर्न में उन्होंने क्या किया कि दे हैव गिवन ऑप्शंस फॉर ग्रामर. सपोज एक सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच का, आपको पहले लिखना पड़ता था, लेकिन अभी आप चिंता मत कीजिए. Great change for you. 4 options will be given and you have to select one of them. The best. This is the first change of your paper pattern. This grammar will be allotted objective option based answers. Out of 4 you have to select one. Correct? And next is vocabulary, जो regular question है. Similar words, opposite words, maybe sometime we call it at synonyms, antonyms, noun form, etc. Right? Question number first B जो है, that is of language study. नॉन टेक्सुअल ग्रामर, जो 4 मार्क के लिए है. हाउ मेनी मार्क्स? 4 मार्क्स. In this first B, non textual grammar, do as directed out transformation of sentences, simple, compound, complex, synthesis. Do as directed, they will ask hardly when, frame WH question. So according to the regular syllabus, this question is change means again objective based question will be there with options. पहले means earlier what happened, students have to write the answers, but here don't worry, it's a nice change for you.
हियर ग्रामर क्वेश्चन विल बी गिवन और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इट्स अ गुड वन फॉर यू. So here do as directed, they will ask a variety of questions. Means that pro forma is not fixed. Frame WH question, notion, hardly vain, anything. Sometime indirect speech. But transformation of sentence means simple compound complex, that is synthesis. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट B2 में जो है spot the error, ये बढ़िया है. Here you have to spot the error. Here you have to spot the error. Yes. A sentence will be given with grammatical errors, maybe tense, articles, preposition, modals. तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि गलती कहाँ है. They will give incorrect sentence and you have to write the correct sentence with plucking out errors. Suppose I saw a man in garden. I saw a man in the garden. So here I have corrected that one. So spot the errors. They will not segregate the sentence. ऐसा segregate नहीं करेंगे कि 1, 2, 3, 4 इनमें से error कौन सा है. No. They will give the sentence with some incorrect features. So फिर error हो सकता है tense में, preposition में, article में और कुछ. So you have to write according to that, spotting the errors. So in next video we will think about that. We will take practice of that one. Okay, let's move forward. Now come to question number 2A. My dear student, it is about unseen passage. Same criteria, same pro forma. 12 marks are there. 12 मार्क के लिए रहेंगे. और क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन में था, मीन्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी देयर. ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चंस, personal response question, complex factual, grammar. Again the grammar will be like, you know, that as I mentioned earlier, objective and vocabulary. Correct. अब क्वेश्चन 2 में जो सबसे इंटरेस्टिंग है दैट इज समरी. यस, समरी रहेगी 3 मार्क के लिए. इट विल बी फॉर 3 मार्क्स एंड ऑफ कोर्स एंटायर पैसेज यू हैव टू ब्रिंग इन 1/3 पोजिशन. यहाँ पे आपकी लैंग्वेज विल बी योर्स. टाइटल शुड बी गिवन 8 to 10 lines, that is the maximum 10 and minimum 8 line. That is the format of summary, and all your points should be included. Correct. So after that you will make a wonderful box to it. So it appears for 3 marks, summary writing. Now move forward. Question number 2C. Sorry, mind mapping. It's a very new question. एक्चुअली दिस इज न्यू लॉन्च क्वेश्चन, बेटर से 3 मार्क के लिए है. यहाँ पे क्या होता है, दे गिव सर्टन आइडिया और सर्टन सब्जेक्ट. डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम डिजाइन यूजिंग योर आइडियाज, थॉट, कंसेप्ट टू इलस्ट्रेट डेवलपमेंट ऑन द टॉपिक. इट कम्स फॉर 3 मार्क्स. ये बढ़िया क्वेश्चन है. सपोज दे विल टेल यू फ्रेम और डिजाइन और डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम और डिजाइन ऑन एडवांटेजेस ऑफ वॉकिंग. तो यहाँ पे आपको आपकी खुद की डिज़ाइन बनानी पड़ेगी. मे बी ट्री डायग्राम, चार्ट, और चॉइस इज योर्स. आपका चॉइस है वो कम्प्लीटली. एंड अकॉर्डिंग टू योर मीन्स स्किल और इमेजिनेशन यू कैन मेक पाई डायग्राम, चार्ट, ट्री डायग्राम, एनीथिंग. सो इट्स वंडरफुल क्वेश्चन ऑफ माइंड मैपिंग वेयर 2 marks are reserved for logical flow, presentation 1 mark, total 3 mark. That is the criteria, assessment criteria for mind mapping. So please watch the video on that mind mapping. That's I'm going to just make a special video on mind mapping. Okay, let's move. Now here section 2nd, section change with title poetry and appreciation. Question number 3A. Here the poem, there are actually out of 8 poems, 1 poem will be asked. How many? 1 poem will be asked. So out of 8, 1 poem. Question number 3A. See the format. It appears for 10 mark. 10 mark के लिए आता है. And it's a scene poem. Section 2. Out of 8, 1 poem. First question, of course, global understanding. As you know, it is mostly, objective based, or maybe true, false, or maybe choose the correct option. Interpretation means with explanation. Analysis question.
After the third question, personal response. As you know, here your logic is check. After there is poetic device, figures of speech. Correct? Poetic device, figures of speech. Please note that in the poetic device they will ask explain a line or expression from a poem, that means, or explain a novel concept from the poem. Novel concept means थोड़ा नया word है आपके लिए, but it is related to its actually compact form में नहीं है, but they may ask to pluck out the line, that means, or maybe any philosophical based question. So it is not a single term concept, that novel means concept. So it will be according to the one who said the paper. It will come in a variety, in a various way. For example, explain this line, or maybe which line indicates the meaning like that. So that is poetic, means what I mean poetic device, including figures of speech sometime. And creativity. Yes, this question is very interesting. Creativity. Here, they expect that you should, they will give, एक आपको टॉपिक दिया जाएगा. Compose a 4-line poem on. Compose a 4-line poem on life or friendship. So it's really wonderful. See the format of that one. Let's see more about creativity. So if we think very deeply about poetic creativity, of course, they may ask, compose a small poem of 4 lines on a given certain topic, or maybe a small poem of 4 lines on given words. एक आपको poem बनाने का है. Or else fill in the blanks to compose a poem by using your own ideas, thoughts, imagination. Or else complete the given poem by adding 2 lines. आपको 2 लाइन दिए जाएंगे, remaining 2 लाइन आप लिखेंगे. Logical. And they may ask, compose a small poem of 4 lines on a topic of your own choice. So it is a variety of questions. It is a variety of questions. For example, they have given compose 4 lines on journey of life by using rhyming word. My dear student, rhyming word should be maintained, because as you know, rhyming word, that is a compulsory part of every poem, most of the poems. Or else उनको आपको पूछा जाएगा compose 4 lines on importance of cloth. नहीं तो there is one more thing. Compose a short poem. They will give the first line, और बीच में 2 line blank छोड़ेंगे, last they may give the line. So in addition you can write your own lines. लेकिन एक काम करो, प्लीज टेक केयर ऑफ व्हाट आई मीन टू से राइमिंग वर्ड्स. और पोएम ऐसे भी आ सकते हैं, दे विल गिव द लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड ऑफ दैट लाइन. बस आपको देखो, शेयर, गिव, केयर, लिव, शेयर, केयर, गिव, लिव. आप ऐसी लाइन बनाएंगे, मीनिंगफुल लाइन बनाएंगे कि आपकी पोएम बन जाएगी और लास्ट में वर्ड आना चाहिए. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ इमेजिनेशन. और एल्स दे विल आस्क लाइक दैट, रीड द फॉलोइंग लाइन्स and add 2 poetic lines to rhyme with line. And interesting? He will now go to sleep, listening to static on the radio. You know that father returning home. अब लास्ट के 2 लाइन आप तैयार करेंगे खुद, वो पोएम के नहीं है, आपके लाइन रहेंगे वो. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो इट नीड्स अ प्रैक्टिस. तो पोएटिक क्रिएटिविटी, द क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन कम्स इन दिस कैटेगरी. ओके, पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, and poetic creativity they will give in this condition. So these are the some specimen of poetic creativity. Hope that you must have understood, but very interesting, you will enjoy. Correct? Let's move forward to the next question. Now after this poem question, appreciation, जो 4 मार्क के लिए आता है. Appreciation means total about that poem in your words. Read the given extract and write the appreciation of the given poem based on the following aspect. Let me clear, my dear. पहले क्या होता था, they will give the name of the poem and they will tell write appreciation of that. लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, they will give only lines of the poem. आपको पोएम का नाम लिखना पड़ेगा, पोएट लिखना पड़ेगा. That is the change. Please note the change. Earlier they used to give poetic lines, poem lines with poem name. अब ऐसा नहीं चल. Now this is change now. They will give only lines. आप you have to identify which poem it is, name of the poem and name of the poet or poetess. Correct? और एक बात, earlier they used to give points. पहले पॉइंट देते थे एप्रिशिएशन लिखते वक्त. अभी आपको खुद की पॉइंट तैयार करना पड़ेगा.
क्योंकि every poem appreciation is different. So here see the guidelines about the poem. Significance of the title आप लिखेंगे पहले. Form the poem, theme and significance, but they will not give the points. Poetic style, language, feature, poetic device, and inspirational message, values, moral reflected, means you will write about all these points. Your opinion, critical evaluation of the poem. इस पॉइंट पे आप पूरा पोएटिक एप्रिसिएशन लिखेंगे. सो प्लीज नोट द चेंज. अर्लियर दे यूज्ड टू गिव पोएम नेम, समटाइम पोएट, बट हियर दे विल गिव ओनली पोएटिक लाइन्स. आपको पोएम पहचाननी पड़ेगी. यू हैव ट्राइड द पोएट एंड यू हैव ट्राइड सम सेंट्रल आइडिया बेस ऑल दिस एप्रिसिएशन. विच वन? अबाउट द पोएम, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, form of the poem, which category it belongs to, whether it's a sonnet or maybe lyric or maybe emotional, that form of poem, theme, significance, importance, poetic style, figure of speech, language, poetic device, total evaluation आपकी लैंग्वेज में. फिर inspirational message, values, morals reflected, and your opinion and critical evaluation of the poem. Please note the change. आपको कंपल्सरी पोएटिस मालूम रहना मीन्स यू शुड नो ऑल दिस वन एंड यू शुड नो पोएम केयरफुली. सो हाउ द मार्क्स आर डिवाइडेड? 4 marks. 2 marks are reserved for appropriateness of theme and language features. 1 mark is for explanation and presentation, and 1 mark for personal opinion and evaluation. Overall your language, presentation, etc. ये हो गया हमारा पोएट्री सेक्शन. अभी तक हमने 3 चेंजेस देखे. एक, ग्रामर विल बी ऑब्जेक्टिव. Sometime in poem they will ask the novel concept of the poem, and one more, this the poetic appreciation. Please note the change. Appreciation अभी आपको poem पहचानना पड़ेगा, and you have to write in your own points. They will not provide sometime points. You have to write your own points. Okay. So dear student, we have finished 2 sections of our question paper. First is prose. Correct. Section first prose, section second that is poetry, section third writing skill. Let me clear about the syllabus. In writing skill you have wonderful choice. There is no matter of any tension or maybe hurry or worry. Here you have plenty of choice. So sockets are there. In that socket 3 writing skill out of, there are overall 4 socket, 4 socket रहेंगे और एक सॉकेट में 3 राइटिंग स्किल रहेंगे. तो आउट ऑफ 3 यू हैव टू सॉल्व 1. बढ़िया चॉइस है, यू विल एंजॉय. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल राइटिंग स्किल. इट्स अ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन. इन तीनों में से आपको एक लिखने का है. चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आई रिपीट, ड्राफ्टिंग, वर्चुअल मैसेज, इमेजिनरी मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन. आउट ऑफ 3 यू हैव टू राइट 1. चलो क्लियर. ये होगा पहला सॉकेट. सेकेंड सॉकेट में 4, 5, 6 ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू क्वेश्चन. इस सॉकेट में 4, 5, 6 में आउट ऑफ 4, 5, 6 यू हैव टू राइट 1. बड़े चॉइस है, जहां पे आपको कंफर्ट लगेगा यू कैन गो फॉर दैट वन. ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू क्वेश्चन. ये होगा आपका सेकेंड सॉकेट. 4 सॉकेट, हर सॉकेट में 3 ऑप्शन. चलो नेक्स्ट सॉकेट 7, 8, 9 का स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग एंड एक्सपांशन ऑफ आइडिया. इन तीनों में से जो आपको कंफर्टेबल है यू कैन गो फॉर दैट. एंड लास्ट सॉकेट 10, 11, 12 फिल्म रिव्यू और समटाइम बुक रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग, अपील राइटिंग. आउट ऑफ 3 you have to write 1. It means that 4 into 4, 16 marks are there for writing skill. So welcome to writing skill section. Question 4, first socket, question 4A. Attempt any one. Out of 3 which one? Virtual message, statement of purpose, group discussion. तीनों ही बढ़िया है, but most of students prefer for virtual message. Easy to write, easy to solve. Choice आपकी है, you can go for that one. If you like purpose, you can go SOP. You can write group discussion. Both are somewhat lengthy. Okay. So how are the marks? Means what is the assessment criteria? Content carries 2 marks. Sequence or flow of ideas 1 mark. And appropriateness, language usage, that is for 1 mark. Total 4 marks for this wonderful question. Question 4th A. पहला सॉकेट हो गया राइटिंग स्किल का. आउट ऑफ 3 यू हैव टू राइट 1. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4B.
second socket. I would like to call it socket. Ready? Yes. Question 4B, सॉकेट 2, राइटिंग स्किल सॉकेट 2. यहाँ पे आपको बढ़िया 3 चॉइस है, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू राइटिंग. आई रिपीट, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू राइटिंग. जो भी क्वेश्चन आपको आपके लिए कंफर्टेबल है, प्लीज गो फॉर दैट वन. क्राइटेरिया इज डिफरेंट फॉर एवरीथिंग. वेयर कंटेंट कैरीज 2 मार्क, प्रॉपर फॉर्मेट 1 मार्क. फॉर्मेट माय डियर, राइटिंग स्किल में याद रखो, फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. And oral presentation 1 mark, so total 4 marks are there. More or less all the means assessment criteria is more or less same, somewhat minor changes will be there. So format याद रखो my dear student, format plays a great role. राइटिंग स्किल फॉर्मेट आना चाहिए. ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू क्वेश्चन, इन तीनों में से जो आपको पसंद है, वेर यू फाइंड कंफर्टेबल, प्लीज गो फॉर दैट. ईमेल ऑल्सो वंडरफुल, रिपोर्ट इट इज समवॉट लेंदी कंपेयर टू रिमेनिंग टू, एंड इंटरव्यू ऑल्सो. बट अब थोड़ा प्लीज नोट द चेंज इन न्यू डिक्लेरेशन. इंटरव्यू पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है. पहले क्या होता था, डायरेक्टली यू कैन राइट 8 क्वेश्चंस, ओनली इंटरव्यू क्वेश्चंस, बट नाउ यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस. न्यू फॉर्मेट, लेट मी क्लियर. सो आई विल टेल यू वंस अगेन. पहले इंटरव्यू क्वेश्चन में दे वुड सिंपली गिव अ क्वेश्चन, राइट अ सेट ऑफ 8 क्वेश्चन टू इंटरव्यू अ फेमस सोशल वर्कर, बस. हियर यू राइट 8 क्वेश्चन फॉर हिम, मैटर गेट फिनिश. बट नो, अकॉर्डिंग टू न्यू डिक्लेरेशन बाय द बोर्ड, you have to follow certain format for interview writing. Let's go for that format, so you will come to know. Once again I repeat, in this socket, question number 4B, email writing, report writing, interview questions. Remaining no change. Email writing format is clear, report writing format is clear, but interview format is changed. Please note the change. Let's discuss about that one. Let's move. Interview writing, new format, new format. Which are changes? Please note the changes. Ready, my dear? Yes. Please note the change in interview questions. Imagine you have to conduct an interview of a distinguished means popular personality in the field of sports. So a नया फॉर्मेट है. Write with the help of following means table and point draft question on the given field associated with the personality. डू नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन. पहले क्या होता था, यू कैन शफल द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. अब ऐसा नहीं चलेगा. जो बोर्ड का फॉर्मेट है, पहले लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉलम करेंगे. लेफ्ट में लिखेंगे नेम ऑफ द इंटरव्यूवी, दैट इज द नेम ऑफ दैट डिस्टिंग्विश्ड पर्सन. सामने आएगा नाम उसका जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं. एरिया ऑफ सक्सेस और रेपुटेशन कौन से, स्पोर्ट है, फिल्म, पॉलिटिक्स और एनी अदर म्यूजिक, फिल्म इंडस्ट्री एक्सेट्रा. डेट, वेन्यू, टाइम, इमेजनरी लिखेंगे आप वहाँ पे, एग्जाम डेट लिख दो. ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू यू कैन राइट ओवर देयर, हाउ मच टाइम, सपोज 20 मिनट, 25 मिनट्स, व्हाटएवर मे बी देयर. क्वेश्चन प्लीज टेक केयर. और आपका इंटरव्यू इसी फॉर्मेट में आना चाहिए जो फॉर्मेट आप मीन्स दैट आई एम शोइंग यू. पूरा ब्लॉक ऐसा रहेगा, पूरा बॉक्स ऐसा रहेगा, राइट हैंड साइड में आपका आंसर आएगा. ओके, सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट वन. स्टूडेंट्स लाइफ, यू विल आस्क क्वेश्चन देयर. स्टूडेंट लाइफ, please tell us about your student life like that. You can write the question. Early interest. So we are eager to know about your early interest. Please narrate about it. Tell about it. Third question, adults. आप right में लिखेंगे. Please, who are your idols in this field? Idol means inspiration. Fourth question, primary training. Right में लिखेंगे. Where did you take your primary training? Or how was your experience about primary training? Number 5, अपॉर्चुनिटी. तो क्वेश्चन कैसे लिखेंगे आप राइट में, हाउ डू यू टैकल द अपॉर्चुनिटीज दैट यू कम अक्रॉस इन योर लाइफ. 6, अकम्प्लिशमेंट मीन्स अचीवमेंट. आप राइट में क्वेश्चन लिखेंगे. विच इज योर ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट. लेफ्ट में पॉइंट, राइट में आपका क्वेश्चन. सिर्फ क्वेश्चन, आई रिपीट, आंसर नहीं. इंटरव्यू क्वेश्चन ओनली, सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे. इट नॉट लाइक डायलॉग. यस. टारगेट, गोल, विच इज योर ग्रेटेस्ट गोल ऑफ योर लाइफ. लेफ्ट में गोल लिखेंगे, राइट में क्वेश्चन लिखेंगे. सजेशन, क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट डू यू वांट टू गिव और व्हाट आर योर सजेशन फॉर द यूथ ऑफ इंडिया. यस,
सो लाइक दैट यू शुड मेक और इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, नए पेज पे लीजिए एंड मेक अ वंडरफुल फॉर्मेट ऑफ दिस वन. लेफ्ट में पॉइंट, राइट में क्वेश्चन, राइट. प्लीज फॉलो द सेम फॉर्मेट. कहाँ से लेके नेम ऑफ द इंटरव्यू, नेम ऑफ इंटरव्यू से लेके लास्ट तक सजेशन तक लेफ्ट में पूरे उनके पॉइंट आना चाहिए और राइट में हमारा आंसर आना चाहिए. होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. रेडी? यस. सो हियर इज वन ऑफ द स्पेसिमेन फॉर यू. नेम ऑफ द इंटरव्यू, Sachin Tendulkar. Area of success, that is cricket, politics, as you know, entertainment world because of media. At date, venue, time 16 December, XYZ College of Arts Commerce, 11 AM is the date. आपका आंसर ऐसे आना चाहिए, राइट. लेफ्ट में उनके पॉइंट, राइट में आपका आंसर. सो ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू 45 मिनट्स, इट्स एवरेज वन. Student life, you are asking question, tell us about your some memorable incidents during your school life. Early interest, you are asking there. Adults, you are asking there. All the left points and right hand side your answer. Okay my dear, so please go for this one. This is the greatest change of your paper pattern. Please note the change in grammar question, where grammar questions answer should not be subjective, they will ask objective. Question first be non-textual grammar also, I told you. Here lastly again we will make summary of all the changes. Hope that you must have understood the new change in interview question. Okay my dear, let's move forward. Writing skill socket number 3. इस सॉकेट में 3 क्वेश्चन रहेंगे. क्वेश्चन 4th C, स्पीच राइटिंग कंपेयरिंग एक्सपांशन ऑफ आइडिया. आई रिपीट, स्पीच राइटिंग कंपेयरिंग एक्सपांशन ऑफ आइडिया. असेसमेंट क्राइटेरिया सेम. पहले रहेगा स्पीच, where logical sequence of ideas 2 mark, introduction 1 mark, conclusion 1 mark, 4 marks. If you don't like speech, go for comparing. It's a wonderful question like anchoring, you know. You have to write the plot of anchoring, where events, connecting event 2 marks, impression introduction 1 mark and summary 1 mark. Expansion of idea बड़े क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बढ़िया थॉट दिया जाता है and you have to expand the idea. Please go through that's videos about every writing skill. I am going to upload soon. Expansion of idea 2 marks and proper introduction 1 mark and remaining for summary 1 mark. So this is the complete format of. तीनों में से जो आपको पसंद है, you can go for speech लिख सकते, compare लिख सकते, expansion of idea, but many students go for speech. After all, choice is yours. तीनों में से आपको एक लिखने का है. So this is the question number 4th C. You have to write 1. Socket number 3 is finished. Question number 4th D. Now next socket we are going for that one. हर socket में 3 ऑप्शन, तीनों में से एक लिखने का है. 4 into 4, 16 marks will be for writing skill. How many marks? 16 mark. Ready? Let's move for the next one. So socket number 4, question number D, 4th D. Let's see what happens here. In that question number 4th D, this is they are the choice for you. Let's go for the choice. So welcome question number 4th D. 4th D socket में आपको again there are 3 choice. Speech writing, comparing. I'm sorry, I'm talking about the earlier one. Now here choice are blog writing, review writing, and appeal writing. The last socket of your writing skill. Yes. Okay. So here first film review, blog writing, appeal writing. फिल्म रिव्यू सब्जेक्टिव, ब्लॉग राइटिंग सब्जेक्टिव, बट अपील राइटिंग बढ़िया क्वेश्चन है जहाँ पे यू कैन ड्रॉ अ ब्यूटीफुल मीन्स यू कैन अप्लाई योर इमेजिनेशन. सो व्हाट हैपन इन फिल्म रिव्यू? ऑफ कोर्स दे विल गिव द सब्जेक्ट, राइट अ फिल्म रिव्यू ऑफ द मूवी दैट यू हैव रिसेंटली वॉच एंड दे विल गिव सर्टन पॉइंट्स ऑल्सो. नो चेंज हियर. इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन फॉर यू. सो इट्स अ रिव्यू क्वेश्चन. Sometimes they may ask book review also, like points, arrangement of topic, importance, special feature, etc. etc. Okay, music, dance, etc. ब्लॉग राइटिंग ये बड़े क्वेश्चन है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा. ब्लॉग राइटिंग में यू हैव टू यूज प्रॉपर फॉर्मेट्स. प्लीज गो फॉर फॉर्मेट. आपने देखे होंगे नेट पे वेबसाइट ब्लॉग्स आर देयर. ओके, सो प्लीज गो फॉर द फॉर्मेट. प्लीज हियर in one video I cannot tell all the formats. Please watch my video. So main content 2 marks, header, manner, navigation, format सब 1 mark and footer is for 4 mark. Footer means downside all the formats. अपील राइटिंग बढ़िया है.
appeal writing में just suppose imagine that you are a member of health club, prepare an appeal requesting people for blood donation. So आपको बढ़िया एक you have to write one format, फिर उसके pictorial effects, you have to use slogans, एक बढ़िया invitation card like that you should make. Presentation very important here. Presentation carries for 2 marks, language 1 mark, and motivational message 1 mark. Many of the student, actually most of the student go for appeal writing. It's wonderful, full of imagination. क्योंकि film review and blog writing, it takes time. They take time. So it's a wonderful choice for you to go for appeal writing. Easy to write and you will get marks also. But lastly, choice is yours. Blindly, जहाँ पे आपको comfort लगेगा, you should go for that one. So these are the 4 sockets of writing skill. 4 into 4, 16. Each socket 3. Out of 3, you have to solve 1. That's fine. Okay, let's move. Section 4, the last section of your paper, exam paper, right? Section 4, that is literally genre novel, completely dedicated to novel. 16 marks. How many marks? 16. 4 novel, 4 into 4, 16. All novels are compulsory. 4 novel, 4 into 4, 16. है तैयार, right? So here question number 5th A. As you know, question number 4th writing skill, 5th first novel. 5th A first novel. First novel totally objective. Totally objective. हर नॉवल कितने मार्क के लिए आएगा? 4 मार्क के लिए. ऐसे 4 नॉवल 4 into 4, 16 marks. Is it clear? So first novel, history of novel, they have given some sample, such type of objective base. First novel will come in objective base, and surely you will enjoy this question. Lekin, my dear student, you have to be extremely careful. You should read all the novels carefully. You should know all the chronicle order, especially first novel. और बाकी जो नॉवेल से you should know all the characters properly. Character, incident आपको मालूम होना चाहिए at any cost. Especially first novel में तो you should know the names. There are many names, but by practice and regular reading, you will manage it. Okay? So this is the question number 5th A, first novel, 4 marks. Right? Let's move to the next one. Second novel, question number 5th B, To Serve with Love, 4.2. Question will be asked on elements like plot, structure, theme, setting, language, character, etc. They will ask, describe, explain, compare, contrast, discuss. That's why I told you, you should know the complete synopsis or complete character. Please read the novel carefully. Or else they will ask the question like illustrate, interpret, or narrate, justify, find, identify. ये question अगर आप बढ़िया पढ़ते हैं नॉवेल 2-3 बार, then only you can get the confidence. Please take care. Question 5th C, around the world in 80 days. Again the question will come for 4 marks. The same criteria will be there. The question will be asked on the elements like plot, structure, theme. The same format will be there. And question number 5th D, the last novel, The Sign of 4. Again the same criteria will be there. Describe, explain, compare, contrast, name, discuss, etc. Question will be based on plot, structure, theme, setting, language, character, etc. So 4 into 4, 16. Only first novel will be objective. First novel will be objective. Remaining will be same. Second, third, fourth. 4 novel, 4 into 4, 16. Overall novel 16. Question number 4 gets finish here, carries 16 marks. Okay? I hope that you must. So dear student, let's have the summary of all the changes in paper pattern. First, grammar question will be objectives. We are not sure whether these changes will be continued, but this year they have prescribed. Let's think about next academic year also, but this year it's confirmed. Second, poetic appreciation, they will give on the lines. You have to identify the poem. You have to write in your own language, in your own points. Third, interview questions. Now it will not be traditional. They will give the guidelines. According to guidelines, you have to carry for that. Okay. After that, novel first question. Novel first. Questions will be objectives. So they are the major changes. And one more new concept, new word is that novel concept of the poem. It's a general question. So these are the 4 to 5 changes observed in new paper pattern declaration.
Please go with that one. Best of luck. Take care. Bye.